Good morning to all. I am Mohammad Naveed sir and welcome to Fajandar Junior College Vahur, Department of Sociology. We already started a topic that's name is Introduction to Sociology. Now today we have to see about the emergence of sociology. Emergence of sociology not in a single year, not in a decade, not in 100 years. That is started from the 15th century. The various types of the influence and factors are responsible for the emergence of the sociology. Many of the things are done in the world, and that's the reason is the emergence of the sociology means sociology become the subject and sociology started the discipline in the society. So we have to see about the what is the factors that influence for the emergence of sociology. So many of the reasons are behind in the emergence of sociology. We have to see what is the factors are responsible for the emergence of sociology. Factors that influenced factors that influenced the emergence of sociology. There is a first is commercial revolution. First factor that is given in our portion, that is the commercial revolution. Commercial means business, trading. Okay, so the commercial revolution is started from the 15th C to 1815 C. That is Christ era. 15th Christ era to 1850 Christ era. Many of the nations are started the commercial revolutions, especially Europe. In Europe, England, France, Dutch, and many of the countries like Germany and the other countries are going for the trading or develop their business. They are roaming in the world. So they are coming in the India also by the route of sea. Okay, the Britishers also coming to India for the purpose of commercial revolution, commercial and the purpose of business. First, the Britishers are coming in India by the purpose of what? By the purpose of trading or business. After that, they are started the politics here. But before that, they are coming in the India by the purpose of business. And Dutch also coming in Goa, that is also for the business. Francis are coming in India for the purpose of business. So the many of the nations are coming in the other nations for the purpose of business, for the commercial and for the trading. That is gives the impact on sociology. What is that? The different peoples, the different culture peoples, because we have to see about the Britishers or European people's culture is different and Indian people's culture is different. They are language is different. The Britishers are spoken the English and we are spoken the many of the language.
So that peoples are coming in the Indian society. So here Indians are copied to the Britishers, and they are learn their culture. They are how to behave, how to what is the clothing style of that persons, and what is the foods are eat by the Britishers or Europeans. So that is the cultural change, and the cultural change is one of the part of the sociology. So the commercial revolution become the various types of the emergence in the sociology. Many of the Britishers, many of the Dutch, many of the French, many of the other nations peoples also come to India by the purpose of business, and that time the society culture, society language are edited or changed. Okay, so peoples are learn the different culture, peoples are learn the different behavior, peoples are learn the different kind of languages, people learn the different types of customs, morals and values. So that is the commercial revolution gives the very huge impact to emergence to the sociology. So the commercial means trading, business. So by the purpose of business, many of the nations coming to the various nations, and that time the social structure is totally changed, and that is the give the birth to the sociology. Okay, clear? Now next is industrial revolution. Industrial revolution. What is the industrial revolution? Means industries are started in very huge large scale. First the peoples are made the product by hand. Okay, they are made the product anything, they are made the cloth, they are made the basins, they are made the anything that is you have to require in the kitchen, that is made by the hands. After that industrial revolution, the products or goods or things are made by the machineries, and that is the made in the companies, and that companies are called the industries. And the industrial revolution is started in the 17th century. The industrial revolution started in 17th century, and that is started in the England. First industrial revolution started in the England, and England is one of the part of Europe. Why am I writing? Because of the question is coming in the exam, that is the industrial revolution took place in the option is given England, so the correct answer is England. And sometimes the same question is asked, the industrial revolution took place in, but in the option England is not given, that is given in Europe, so Europe also are correct, because England is a one of the part of Europe. So there is a question is asked in both ways, that is asked by the England also, and that is asked by the Europe also. The industrial revolution is started in the 17th century from the England or Europe. That time the many of the things are made by the machineries, means peoples are made the clothes by hand machines, but now the machineries are come, and that machines are produced large scale. Okay, for example, we are made one water glass. Okay, so by hand we have to make that water glass, we require the so much time, and the finishing also not coming in that glass. So that is the
handmade, okay, but in the company they are made the large scale quantity water glass in limited time, and that is a time consuming, and the quality of the glass, water glass, is very well. So large scale producing is possible due to industrial revolution, and that industrial revolution product are made. After that, that product are selling the using of commercials or business. So many of the seas routes and roads are used for the selling that industrial product in the different part of the society. So the peoples are coming, and that time industrial revolution create the new vision in the sociology, and the many of the sociological concept are started due to the industrial revolution, and peoples are very correlated and very interacted due to industrial revolution. Okay, now next is French political revolution. There is a one of the political revolution are done in the French in the year of 1896. They are started from the 100 years ago, but that is a giving the impact is in the 1896. So why we are taking the French political revolution? Because of the our sociological father of sociology are born in the France, and they are French, and they are writing the many of the books for the French political revolutions, and the many of the sociological concept they are writing in the book. That time the French political revolution become the huge, and many of the French philosophers and sociologists are made due to the French political revolution. Emile Durkheim, Mary Activa, after that is a Auguste Comte, and many of the sociologists and many of the philosophers writing for this society, and that is the giving the birth to the sociology. The Auguste Comte write the book The Positive Philosophy in this time, and in this time they are use the term sociology first, and that's why the French political revolutions are giving the birth to the sociology. Many of the political concepts are not matched in the France. Many of the interdisciplinary, or we are to send that discriminations are in the France. That's why the French political revolution are started, and that time the French political revolution is started, many of the philosophers and sociologists write the many of the books, and that time the French political revolutions also gives the birth to the sociology. Harriet Martineau, one of the sociologists, they are also writing about the French political revolution, and the sociological concepts are found in the society. After that, scientific revolution. Scientific revolution. Scientific revolution, we are seen in the concept of scientific revolution, many of these scientific appliances made in the our society. The many of the, you have to seen about the one of the example, we have to take the television, okay, TV.
The TV is one of the scientific invention. Okay, that scientific invention gives the knowledge about the world. In world, that is Africa. There's Africa's culture, Africa's custom, values, morals. We are seen in the television, and sometimes we are use the foods, their clothes are in our society. That is the change by the scientific revolution, because scientific things we have to see that, and after that we have to change our society. That is a scientific revolution. Many of the concept you have to see that, one about scientific things, washing machine. Okay, the peoples are wash the cloth by the hands. So now condition is that each and every person's wash the cloth using the washing machine. So there is a change is occur. So society is changed. That's why the scientific revolutions also gives the importance to the sociology. One of the we are taking the one example. That's what peoples are. You collect the water from the well or river. Okay, but now the peoples so we have to see about the scientific revolution. Many of the scientific revolutions is done, and that is the giving the impact on the sociology. So here scientific revolution we have to see the many of the examples. We have to see about the television example, we have to see about the washing machine example, and one of the example is that the peoples are collected water from the well or from the river, but now the everyone have their borewell. So that the peoples are going to the going to the well or going to the river, they are sociology connected. But now peoples are living in our life, so that is a society's change. That's why sociology gives the scientific revolution gives the impact on the sociology. And there is a one of the urbanization. What is the urbanization? So we have to see about the urbanization. There is a urban meaning the city. And peoples are living in the cities, that is the urban peoples, and that is called the urbanization. Peoples are want to live in the urban cities or cities, that is called the urbanization. Some of the peoples are live in the villages. Okay, so that time they are from the rural community, and some of the peoples are living in the forest. Means we have to see about the Katkari or anything. So they are belong from the tribal community. Okay, so there are the different types of people. So urbanization is one of the factors that is responsible for the sociology. For example, now today's world, the peoples are want to live in the urban area. They are want to live in the cities. Okay, so they are living in the cities. That time we have to see about that. They are not want to live in the villages. They are migrate from village to city, means rural area to urban area. Why they are coming? Because in the cities different types of the facilities are available, and well facilities are available. In the cities we have to see the water facilities available, that market facilities. That is a very big and huge reason the peoples are want to live in the city. Why? Because
they are market facilities and everything is available in the cities market. That's why peoples are want to live in the urban areas. After that, the water facilities, road facilities, electricities, all the things are available in the urban area or cities. Peoples are want to live in the cities, and that time the peoples are not from the single society. We have seen that the in the any of the city, the peoples, one people is from the Maharashtra, second people is from the Madhya Pradesh, third people is living from the third person is from the Uttar Pradesh state, fourth people is from the Bihar state. There is another state persons are living in the cities. So their customs is different, their culture is different, their languages are different, and they are living in single society. So that time the culture is mixed to each other. So the sociology is study about the urbanization, and that's why urbanization gives the birth to the sociology, because the different kinds of the peoples, different customs of the peoples, different cultures of the peoples, different languages, different language spoken peoples are living in the single society. That's why we are said that the urbanization is giving the birth to the sociology. And one of the important thing is that the urbanization is a result of industrialization. Urbanization is the result of industrialization. Why this is telling that urbanization is the result of industrialization? We are consider one of the example, one of the villages population of 5,000. Okay, one of the industries are made, that is a very big company are open the plant in that village. There is a require 2,000 workers. So 2,000 workers, engineers, all the facilitated staff are coming on that place. They are require the houses, means 2,000 families are living. 2,000 families means 2,000 fives are directly 10,000 people are increases. 10,000 people are increases. Markets are established. After that, schools are established. The peoples are required. The colleges are established, and many of the other peoples are also coming. That small villages, that population have only 5,000, that become the 50,000 population city. So that's why industrialization giving the birth to the urbanization, or in the other words, we are say that urbanization is the result of industrialization. Okay, so here we have to see that the factor influence for the sociology. Now for Urdu. समाजियात का तारुफ इस सबक की हम शुरुआत कर चुके थे. आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है समाजियात का कयाम. समाजियात का कयाम कैसे वकू पजीर हुआ, कैसे समाजियात बना, इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी. समाजियात के कयाम में बहुत सारी चीज़ें जो थी, वजह थी उसकी, जिसकी वजह से समाजियात बनता चला गया. समाजियात सिर्फ 1 साल या 10 साल या 100 साल में बना हुआ मजमून नहीं है, बल्कि इसे बनने में कई साल लगे और ये बनते बनते बहुत बड़ा एक मजमून बन चुका है, जो समाज के तमाम तर हिस्सों के बारे में मालूमात देता है. तो इसके लिए हम जो देखने जा रहे हैं कि समाजियात के कयाम में असरअंदाज अवामिल.
समाजियत के क़याम पर असरअंदाज अवामिल। इस तरह से बहुत सारे अवामिल हैं जो समाजियत के क़याम पर असरअंदाज हुए, लेकिन पहले हम एक के बाद दिगरे से देखने जा रहे हैं। पहला जो अवामिल है वो है तिजारती इनकलाब। तिजारती इनकलाब, तिजारती इनकलाब जो 15वीं सदी से 1850 यहाँ तक 18वीं सदी तक चलता रहा। बहुत सारे ममालिक तिजारत की गर्ज से अलग अलग ममालिक में जाया करते थे। जिस तरह से हम जानते हैं कि यूरोप के बहुत सारे मुल्क हमारे हिंदुस्तान भी पहुँचे, जैसे अंग्रेज़ आए यानी इंग्लैंड के लोग आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, डच आए। इस तरह के कई लोग तिजारत की गर्ज से दूसरे ममालिक में जाया करते थे। अब वो पहले तो अंग्रेज़ हमारे यहाँ पर तिजारत की गर्ज से ही आए, बाद में उन्होंने यहाँ पर राज करना और सियासत करना शुरू कर दिया, लेकिन वो पहले जो आए थे वो तिजारत की वजह से ही हिंदुस्तान में आए थे। अब तिजारत के लिए लोग जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाया करते थे। अलग अलग हिस्सों में पहुँचने के बाद जब वो वहाँ पर पहुँचते थे तो उनके रहन सहन अलग थे, उनके खाने पीने की अशियाएँ अलग थी, और उनकी बोली, उनकी ज़बान, उसके साथ साथ उनकी सकाफ़तें अलग अलग थी। इस तरह से वो लोग जब दूसरे लोगों में जाते तो दूसरे लोग भी उनकी सकाफ़तों को सीखने की कोशिश करते, उनकी ज़बानों को सीखने की कोशिश करते, उनका इल्म सीखने की कोशिश करते, और इसी तरह से नए समाज का बनना शुरू हुआ और समाजियात को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से यहाँ रहते थे, और अलग अलग तरह के लोगों का यहाँ पर रहने की वजह से, तिजारत की गर्ज से मिलने की वजह से वो एक दूसरे की ज़बानें सीखते थे, एक दूसरे की सकाफ़तें सीखते थे, एक दूसरे के अवामिल सीखते थे। इस तरह से उनकी ज़िंदगी बिल्कुल भी तब्दील हो जाती थी, जिसे हम कह सकते थे कि समाजियात बिल्कुल भी तब्दील हो जाता था, समाज तब्दील हो जाता था। इसी को हम कह सकते हैं कि तिजारती इनकलाब जो था वो समाजियात के क़याम पर असरअंदाज था। अगला जो हम देखने जा रहे हैं वो है सनती इनकलाब। सनती इनकलाब यानी क्या? मुख्तलिफ सनतें कायम होने लगी पूरी दुनिया में। सबसे पहले जो हम कहा जाएगा तो सनती इनकलाब 17वीं सदी में शुरू हुआ, और सनती इनकलाब सबसे पहले शुरू हुआ इंग्लैंड में और यूरोप में। कभी आपको सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि सनती इनकलाब कहाँ से शुरू हुआ? अगर आपको ऑप्शन में इंग्लैंड दिया गया है तो उसका जवाब इंग्लैंड है, और अगर ऑप्शन में आपको यूरोप दिया गया, इंग्लैंड नहीं दिया गया, तो उसका जवाब यूरोप है, क्योंकि इंग्लैंड एक हिस्सा है यूरोप का। इसीलिए कभी इंग्लैंड भी पूछा जा सकता है, कभी यूरोप भी पूछा जा सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लैंड है तो इंग्लैंड आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यूरोप है तो यूरोप, दोनों एक साथ नहीं देते हैं, कोई भी एक आपको ऑप्शन दिया जाएगा। 17वीं सदी से जब सनती इनकलाब शुरू हुआ, यानी सनती इनकलाब यानी कारखाने का निज़ाम, बड़े बड़े कारखाने बनाए जाने लगे और बहुत ज़्यादा मिकदार में अशिया बनाए जाने लगी, जिसमें हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मिकदार में जब ये अशिया बनाई जाने लगी तो इससे बेचने के लिए तिजारत की भी ज़रूरत पड़ती थी, और तिजारती गर्ज से और सनती गर्ज से लोग एक दूसरे को मिलते थे, और एक दूसरे की ज़बानें, एक दूसरे की सकाफ़तें, एक दूसरे का रहन सहन, एक दूसरे के कपड़े पहनने के तरीके वो एक दूसरे से सीखते थे, और इसी तरह से समाजियात के क़याम को एक नई चलन मिली, उन्हें एक नया वजूद मिला, और समाजियात के क़याम में ये बहुत अहम अवामिल था, अमल था, जिसकी वजह से सनती इनकलाब की वजह से समाजियात पूरी दुनिया में फैलने लगा। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सनती इनकलाब में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सनती इनकलाब जैसे जैसे बढ़ा तो पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। ठीक है, इसके बाद जो देखने जा रहे हैं हम वो है फ्रांसीसी सियासी इनकलाब।
फ्रांसीसी सियासी इनकलाब। फ्रांस जो मुल्क है इसे क्यों लिया गया? फ्रांस जो मुल्क है जहाँ पर सियासी इनकलाब चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ और लोगों के साथ अदम मसावत किया जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो फ़िलासफ़र थे, जो फ़लसफ़ाकार थे और बहुत सारे माहिर समाजियात थे, उन्होंने किताबें लिखना शुरू की। जो हमारे बाबाए समाजियात हैं अगस्त कॉम्ट, ये भी कहाँ के रहने वाले थे? ये भी फ्रांस के ही रहने वाले थे और इसी फ्रांसीसी सियासी इनकलाब का उनके ऊपर असर हुआ और उसी वजह से उन्होंने किताबें लिखना शुरू की, जिसमें उन्होंने समाजियात लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और बहुत सारे समाजियात के नए उसूल व ज़वाबित उन्होंने अपनी किताबों में लिखे और उन किताबों के बाद उनकी जो है फ्रांसीसी सियासी इनकलाब में तब्दीली हुई और इनकलाब तब्दील होते होते बहुत सारे हमें ऐसे माहिर समाजियात मिले, जैसे अगस्त कॉम्ट, इसके बाद इमाइल दुर्खेम, इसके बाद हैरियट मार्टिनो। इस तरह के कई माहिर समाजियात हमें मिले और उन माहिर समाजियात ने बहुत ज़्यादा समाजियात को बढ़ाने में मदद की। फ्रांसीसी सियासी इनकलाब 1896 में शुरू हुआ और पूरी दुनिया में जिसका असर पड़ा। इसके बाद साइंसी इनकलाब। साइंसी इनकलाब साइंसी इनकलाब जब शुरू हुआ यूरोप से ही शुरू हुआ और इसके बाद बहुत सारी अशियाएँ बनाई जाने लगी और ऐसी अशिया की वजह से समाज में बिल्कुल भी तब्दीली हो गई, जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप देख सकते हैं कि साइंसी इनकलाब में हम मिसाल के तौर पर देखते हैं टेलीविज़न, टीवी जो था एक तरह की ऐसी चीज़ थी कि दुनिया में कोई भी काम चल रहा हो वो आप बैठकर आपके घर पर देख सकते थे, जिसे हम जानते हैं कि वो बिल्कुल भी हमारे जैसे हमें अफ्रीका की सकाफ़त देखनी हो तो अफ्रीका की सकाफ़त किस तरह चलती है वो साइंसी टीवी के ज़रिए हम सीख सकते थे। इसके अलावा मैंने एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वॉशिंग मशीन की। पहले लोग हाथों से कपड़े धोते थे लेकिन अब वॉशिंग मशीन के इस्तेमाल से कपड़े धोते हैं और इसी वजह से अब हम देख सकते हैं कि लोगों का समाजियात जो है वो तब्दील हुआ है। इसके साथ साथ पहले जो लोग थे वो घरों में पानी जो है वो कुएँ और नदियों से भरते थे, लेकिन अब जो है पानी वो अपने बोरवेल से भरते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो लोग मिलजुल कर जाते थे पानी भरने के लिए, समाजियात के ऊपर समाज में उन्हें क्या चल रहा है इसकी मालूमात मिलती थी, वो अब उन्हें दूसरे चीज़ों से मिलने लगी हैं। इस वजह से लोग अब आसानी से उस चीज़ की तरफ नहीं जाते। तो साइंसी इनकलाब भी बहुत बड़ा असरअंदाज करने वाला अवामिल था जिसने समाजियात के क़याम पर असरअंदाज किया। इसके बाद हम जो देखने जा रहे हैं वो है शहरियाना। शहरियाना, शहरों में रहना, आज के समाज के जो लोग हैं ये शहरों में रहने को तरजीह देते हैं, ये शहरों में रहना पसंद करते हैं और शहरों में ही अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात है, क्योंकि शहरों में जो सहूलियात होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और आसानी से मिलने वाली सहूलियात होती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि लोगों को आसानी से पानी मिलता है, आसानी से उन्हें मार्केट दस्तयाबी होती है और मार्केट में तमाम तरह की अशिया उन्हें मिल जाती है एक ही जगह। इसके अलावा सड़कें अच्छी होती हैं, इसके अलावा घर जो होते हैं वो अच्छे बने होते हैं। इस वजह से लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं और शहरों में रहने की वजह से हम देख सकते हैं कि शहरों में किसी एक समाज का इंसान नहीं रहता, बल्कि शहरों में अलग अलग समाज के लोग रहते हैं। जैसे कोई एक जो है महाराष्ट्र का रहने वाला हो तो दूसरा यूपी का रहने वाला है, तीसरा बिहार का रहने वाला है, चौथा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इस तरह से एक ही समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जिनकी सकाफ़तें अलग है, जिनकी ज़बानें अलग है, जिनका बोलचाल अलग है, जिनके खाने की अशिया अलग है, लेकिन ये लोगों से मिलकर एक नया समाज बनता है
और इसी वजह से नया समाज बनने की वजह से समाजियात के क़याम में असरअंदाज होने वाला अवामिल जो है वो एक अवामिल है जो वो है शहरियाना। अब यहाँ पर एक मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया हूँ कि शहरियाना सनतियाना का नतीजा है। क्यों कहा जाता है ऐसे? जैसे शहरियाना जो है वो सनतियाना का नतीजा, यानी शहर जो बनते हैं वो सनतों की वजह से बनते हैं। अब अगर आप जानते हैं कि अगर कोई एक छोटा सा गांव है जिसकी जो है आबादी सिर्फ 5,000 है, लेकिन वहाँ पर एक सनत डाल दी जाए जहाँ पर 2,000 मज़दूरों की ज़रूरत है, तो 2,000 मज़दूर तो आएंगे, उनके साथ साथ उनके ख़ानदान भी वहाँ रहने आएंगे। उनके ख़ानदान आएंगे तो 10,000 लोगों की आबादी तो ऐसी ही हो गई। उन लोगों के लिए स्कूलों की ज़रूरत पड़ेगी, उन लोगों के लिए कॉलेजों की ज़रूरत पड़ेगी, उन लोगों के लिए मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह बढ़ते बढ़ते वो 5,000 की आबादी का गाँव जो 50,000 के एक शहर में तब्दील हो जाता है। तो एक सनत आने से पूरा गाँव जो है वो शहर बन जाता है, यानी शहरियाना सनत जो है वो शहर को जन्म देती है। इसीलिए हम कह सकते हैं शहरियाना सनतियाना का नतीजा है। नाव फॉर मराठी, समाजशास्त्राचा परिचय हे घटकाची आपण सुरुवात केली होती। आज जे आपण बघणार आहे ते आहे समाजशास्त्राचा उदय। समाजशास्त्राचा उदय जे झाला ते फक्त एका दिवसात, एका वर्षात व 10 वर्षात नाही झाला व 100 वर्षात नाही झाला। त्याच्या उद्भवनासाठी खूप वेळ लागला आणि त्याच्यानंतर समाजशास्त्राचा उदय झाला। तर आपल्याला जे बघायचे आहे ते आहे समाजशास्त्राच्या उदयाला प्रभाव टाकणारे घटक। समाजशास्त्राच्या उदयाला खूप प्रभाव टाकणारे घटक होते, पण त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिलेले आहे? त्याच्यामध्ये पहिला जे दिलेला आहे ते आपल्याला आहे व्यापार क्रांती। व्यापारिक क्रांती व व्यापार क्रांती। व्यापार क्रांती हे 15व्या शतकात सुरू झाली आणि 18व्या शतकापर्यंत खूप मोठ्या पद्धतीने केली जात होती। खूप काही असे देश होते जे व्यापारासाठी दुसऱ्या देशामध्ये जायचे। प्रत्येक विश्वामध्ये असे खूप प्रकारचे देश होते जे व्यापारासाठी एक जागेतून दुसऱ्या जागी जायचे। आपल्या भारतात पण असे काही देश आले, त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता ब्रिटिश जे आले होते व्यापारासाठीच आले होते। नंतर त्यांनी इथे काय आपण बोला शकता त्यांनी राजशासन सुरू केला, पण पहिले जे आले होते ते व्यापारासाठी आले होते। डच आपल्या भारतात आले, फ्रेंच लोक आपल्या भारतात आले आणि त्यांचा कार्य काय होता? व्यापार करायलासाठी आले होते। आणि जेव्हा ते व्यापारासाठी कोणत्याही देशामध्ये जायचे तर देशांचे दुसरे लोक जे आहे ते त्यांना बोलण्यासाठी त्यांची कोणती भाषा आहे ते भाषा शिकायचे, त्यांची कोणती संस्कृती आहे ते संस्कृती शिकायचे आणि ते कोणते कोणते पदार्थ आपल्या अन्नामध्ये सामील करतात व अन्न कोणत्या कोणत्या पदार्थाचं ते खातात त्याच्यासाठी लोक त्यांची संस्कृती शिकायचे। आणि तिथूनच आपण बोलू शकता समाजशास्त्रामध्ये त्याचा प्रभाव पडला आणि समाजशास्त्राला प्रभाव टाकणारा एक घटक जे होता ते होता व्यापारिक क्रांती व व्यापार क्रांती।
त्याच्यानंतर आपल्याला जे बघायचं आहे ते आहे औद्योगिक क्रांती. औद्योगिक क्रांती. औद्योगिक क्रांती म्हणजे काय? औद्योगिक क्रांती अशी क्रांती जेव्हा उद्योग जे आहे, कारखाने जे आहे ते खूप मोठ्या पद्धतीमध्ये उघडायला सुरुवात केली गेली. ते 17व्या शतकामध्ये आपल्या भारतात विश्वामध्ये 17व्या शतकामध्ये औद्योगिक क्रांती हे घडली आणि ते त्याच्या जे कुठून सुरू झाली होती ते इंग्लंड आणि युरोपमधून सुरू झाली होती. तर तुम्हाला कधी प्रश्न आला तर तुम्ही लिहायचा इंग्लंड, अगर जेव्हा तुम्हाला ऑप्शनमध्ये दिलेला असेल तर तुम्ही इंग्लंड लिहायचा आणि युरोप दिलेला असेल तर युरोप लिहायचा. तर हे जे आहे औद्योगिक क्रांती जेव्हा सुरू झाली, विश्वात सुरू झाली, तर विश्वामध्ये खूप त्याच्यामध्ये बदल झाले. आपण बघू शकता त्याच्यामध्ये की औद्योगिक क्रांतीमुळे खूप लोक एक दुसऱ्यांच्या जवळ आले आणि त्यांनी आपला जीवन जे आहे ते व्यतीत करणं सुरू केलं. कारखाना प्रथा आपल्या विश्वामध्ये सुरू झाली. आपण कोणतीही वस्तू जेव्हा पहिले हाताने बनवत होते ते वस्तू आपण जे आहे ते मशिनरीचे उपयोगाने व कारखान्यामध्ये बनवायचे. उदाहरणार्थ आपण एक गिलास, जेव्हा पाणीचा गिलास आपण बनवायला गेलो तर ते हाताने बनवायला आपल्याला खूप वेळ लागेल आणि ते इतकी चांगली पद्धतीचं बनणार नाही. पण जेव्हा ते कारखान्यामध्ये बनवायला घेणार तर ते खूप चांगली पद्धतीचं बनणार आणि त्याला वेळ पण कम लागेल. तर हे औद्योगिक क्रांती सुरू झाली आणि औद्योगिक क्रांतीमुळे विश्व जे आहे जवळ आला आणि लोकांना आपल्या समाजाची संस्कृती, भाषा व मूल्ये एक दुसऱ्यांना सांगू लागले आणि समाजशास्त्राचा उदय झाला. त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे फ्रेंच राज्यक्रांती. फ्रेंच राज्यक्रांती. फ्रेंच राज्यक्रांती म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये आपण बोलू शकता की फ्रेंच जे लोक होते फ्रेंच जे राज्य होता त्याच्या देशामध्ये खूप असे काही समस्या चाललेले होते. त्याच्या विरोधासाठी खूप लोकांनी राज्यक्रांती उद्भवली आणि त्या राज्यक्रांतीमुळे आपल्याला खूप बदल बघायला मिळाले. आणि फ्रेंच राज्यक्रांती म्हणजे काय? फ्रेंच जे लोक होते त्यातून ते जे लेखक होते व समाजशास्त्रज्ञ होते त्यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये समाजासाठी खूप प्रयत्न व खूप काही प्रकारचे लेखन त्यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये लिहिले आणि तिथूनच समाजशास्त्राचा उदय झाला. समाजशास्त्राचा जे आपण त्या म्हणू शकता जनक, समाजशास्त्राचे जनक जे आहे ऑगस्ट कॉम्ट हे फ्रेंच होते आणि त्यांनीच आपल्या पुस्तकामध्ये समाजशास्त्र या शब्दाचा वापर केला आणि तिथूनच समाजशास्त्राची सुरुवात झाली आणि ते राज्यक्रांती आपल्या समाजशास्त्रासाठी प्रभाव टाकणारा घटक बनली. त्याच्यानंतर विज्ञान क्रांती. विज्ञान क्रांती. विज्ञानामुळे आपल्या विश्वामध्ये खूप बदल झाले आणि तेच क्रांती आपल्या समाजशास्त्रावर प्रभाव टाकणारा घटक पण बनली. उदाहरणार्थ आपण बघू शकता की टेलिव्हिजन जेव्हा न होता तर लोकांना खूप माहिती माहीत न पडायची, पण जेव्हा टेलिव्हिजन व टी व्ही आला तर लोकांना आफ्रिकाचे लोक कसे राहतात, त्यांची संस्कृती कशी आहे, ते कोणती भाषा बोलतात ते आपल्याला टी व्हीमध्ये बघायला मिळते. तर ते काय झाला, त्यांची संस्कृती आपण आपल्या घरी बसून बसून शिकले. तर हे झाला विज्ञानापासून. वैज्ञानिक एक गोष्ट आपल्याला मिळाली आणि तिथूनच आपली वैज्ञानिक क्रांती झाली आणि वैज्ञानिक क्रांतीमुळे आपला समाज पण बदलला.
त्याच्यामध्ये आपण आणखी एक उदाहरण घेऊ शकता आपली वॉशिंग मशीनचा. लोक पहिले कपडे धुण्यासाठी आपल्या हाताचा उपयोग करायचे, नंतर वॉशिंग मशीन आली आणि लोक आज मशीनमध्ये आपले कपडे धुतात. तर हे जे झाला तर ते आपला विज्ञान क्रांतीमुळे झाला आणि समाजावर पण त्याचा परिणाम पडला. त्याच्यानंतर आणखी कितीही आपण त्याचे उदाहरणं बघू शकता की वैज्ञानिक वस्तूंचा वापर करून आपल्या समाजशास्त्रामध्ये बदल झाला, आपल्या समाजामध्ये बदल झाला. त्याच्यानंतर आपल्याला जे बघायचं आहे ते आहे नागरीकरण व शहरीकरण. आपल्या पुस्तकामध्ये नागरीकरण दिलेलं आहे, पण इयत्ता 12वीच्या पुस्तकामध्ये शहरीकरण पण दिलेलं आहे. तर आपल्याला दोनही शब्द माहीत पाहिजे. नागरीकरण नगरला म्हणतो आपण आणि शहरीकरण. तर नागरीकरण आणि शहरीकरण हे पण आपल्या समाजशास्त्रावर प्रभाव टाकणारा घटक बनला. त्याच्यामध्ये आपण पाहू शकता की शहरीकरणामुळे लोकांच्या जीवनामध्ये खूप बदल झाले. आपण पाहू शकता की शहरी लोक जे आहे ते शहरी भागामध्ये राहण्याला प्राधान्य देतात. ते शहरी भागामध्ये राहण्याला जायची त्यांची इच्छा असते. कारण काय, तिथून सर्व जे आपण बोलू शकता फॅसिलिटी असतात ते खूप चांगली व उत्तम पद्धतीची असतात. तिथे पाणीची टंचाई खूप चांगल्या पद्धतीचे असते. त्याच्यानंतर तिथे मार्केट असते. त्याच्यानंतर तिकडे रस्ते खूप चांगली पद्धतीचे असते आणि तिथून इलेक्ट्रिसिटीचं ते वितरण जे आहे ते खूप चांगल्या पद्धतीचं असतं. तर आपण बघू शकता की शहरीकरण व शहरी भागामध्ये लोकांचे प्राधान्य असते. शहरी भागांमध्ये त्यांना जायचं असते आणि शहरी भागांना त्या प्राधान्य देतात. तर शहरी भागामध्ये जेव्हा लोक गेले तर शहरी भागामध्ये एक शहरी असं नसते की ते प्रत्येक एकही समाज असं असेल. ते कोणता एक महाराष्ट्राचा असेल, कोणी एक मध्य प्रदेशचा असेल, कोणी एक UPचा असेल, कोणी एक बिहारचा असेल. तर एका जागेवर खूप समाज एकाकडे येतात आणि त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता की वेगळी वेगळी संस्कृती, वेगळी भाषा आणि वेगळे भाषेचे लोक एका जागेवर राहायला सुरुवात करतात. आणि त्याची आपण बघू शकता की शहरीकरणामुळे नवीन समाज बनतं आणि ते नवीन समाज बनल्यानंतर ते नवीन समाजीकरण होतो आणि ते आपल्या प्रभाव टाकणारा घटक आहे समाजामध्ये. अब त्याच्यामध्ये आपल्याला एक गोष्ट जे दिलेली आहे ते आहे शहरीकरण हे औद्योगिकरणचा परिणाम आहे. औद्योगिकरणाचा असं का म्हटलेलं आहे की औद्योगिकरणाचा परिणाम आहे? जेव्हा एक छोट्याशा गावामध्ये ज्याची जनसंख्या फक्त 5,000 आहे, त्या गावामध्ये कोणताही उद्योग पडला, तिथे 2,000 मजदुरांची गरज आहे. तर 2,000 मजूर येईल, त्यांचे कुटुंब पण येईल. तर 10,000 व्यक्ती झाले. 10,000 व्यक्तींसाठी शाळा, कॉलेज, त्यांच्यासाठी मार्केट, त्यांच्यासाठी रस्ते, त्यांच्यासाठी काम करणारे लोक, असे खूप लोक येईल. आणि 5,000 जनसंख्येचा जे छोटासा गाव होता ते आता 50,000 जनसंख्येचा एक शहर बनला. तर हे काय झाला? औद्योगिकरणामुळे झाला. औद्योगिकरण शहरीकरणाला जन्म देतो व शहरीकरण हे औद्योगिकरणाचा परिणाम आहे. तर इथेच आपण हे व्हिडिओ संपत आहे. धन्यवाद.